how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is devotional paths to the divine. Points to study: rise of Islam and Sufism, Bhakti movement, some reformer of Bhakti movement, popularity of the Bhakti movement, new faiths, Zoroastrianism, the ages, case study, Kabir. Development in the field of religious folk arts and language in India during the medieval times have been important milestone in the evolution of the composite culture of India. New religious movements like Sufism and Sikhism along with Bhakti movement contributed to this process. If you look around, you will see the impact of Islam on many aspects of Indian culture. You might have visited some famous monuments in India. These monuments stand as the symbol of the composite nature of Indo-Islamic culture in India. You can also see how various religions in India, including Islam, have influenced each other. Besides, every region in India is famous for giving shape to some folk art or the other. तो बच्चों, आपने अब हमारे देश में देखा होगा कि काफ़ी सारे रिलीजन्स जो थे वो डेवलप हुए थे. उसके थ्रू काफ़ी फोक आर्ट्स और काफ़ी लैंग्वेज जो थी वो इंडिया में डेवलप हुई थी मेडावल टाइम्स में. न्यू रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि सूफिज़म, सिखिज़म विद भक्ति आंदोलन जो थे वो हमारे इंडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोसेस को. अगर आप आसपास देखेंगे तो आप इस्लाम का इम्पैक्ट अपनी आसपास की सोसाइटी में देखेंगे. ये जो इस्लाम था ये उन्हीं दिनों हमारे कंट्री में आया था. आपको पता ही है कि पहले हमारे कंट्री में पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत वगैरह बोली जाती थी. लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के जब इन्वेडर्स आए थे, जब यहाँ पे ट्रेडर्स आए थे, तो उनके थ्रू उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी हमारी कंट्री में आई थी. Rise of Islam and Sufism. The Muslim first came to India in the 18th century AD, mainly as traders. They were fascinated by the social cultural scenario in this country and decided to make India their home. The traders who came to India from Central and West Asia carried back with them traces of Indian science and culture. As a result, they became cultural ambassadors of India by disseminating this knowledge to the Islamic world and from there to Europe. The immigrant Muslims also entered into matrimonial alliances with the local people and learned to live together in harmony. There was mutual exchange of ideas and customs. The Hindus and Muslims influenced each other equally in dress, speech, manners, customs, and intellectual pursuit. The Muslims also brought with them their religion, Islam, which had a deep impact on Indian society and culture. तो बच्चों, हम जान लेते हैं कि इस्लाम और सूफिज़म का राइज कैसे हुआ था. जब 18th सेंचुरी में मुस्लिम हमारे भारत आए थे, इंडिया में आए थे, एज ए ट्रेडर वो लोग आए थे और यहाँ के सोशल कल्चर को देखकर, सिनेरियो को देख के वो काफ़ी फैसिनेट हुए थे और उन्होंने यहीं बसने का फ़ैसला कर लिया था. ठीक है, ये जो ट्रेडर्स थे ये सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया से आए थे और वो यहाँ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए आए थे, अपने जो धर्म है उसे प्रमोट करने के लिए आए थे. बहुत सारे इमिग्रेंट मुस्लिम जो थे वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू भी हमारे कंट्री में एंटर हुए थे. मतलब उन्होंने यहाँ आकर शादी की और फिर वो यहीं बस गए थे. जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम थे वो एक दूसरे से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. उनकी ड्रेसेस को देख के, उनकी स्पीच, उनके मैनर, उनके कस्टम से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस माने जाते थे. तो इस तरह से जो इस्लाम धर्म था उसका काफ़ी प्रचार जो था वो इंडिया में होना शुरू हो गया था. Prophet Muhammad preached Islam in the 17th century AD in Arabia. He was born in AD 571 in the Quraysh tribe of Arabia. He migrated to Medina from Mecca in AD 622 and this marked the beginning of the Hijra era. According to the Muslim belief, Quran is the message of Allah revealed to Muhammad through his archangel Gabriel. It has been translated into several languages. The 5 fundamental principles of Islam are Tawheed, belief in Allah, namaz, prayers 5 times a day, roza, fasting in the month of Ramzan, zakat, giving of alms, Hajj, pilgrimage of Makkah. Prophet Muhammad's saying was preserved in what is called the Hadith or Hadith. After his death, the
caliphate was established. There were 4 pious caliphs. Islam talked of equality, brotherhood, and the existence of one God. Its arrival particularly made a profound impact on the traditional pattern of the Indian society. The rise of both the Bhakti and the Sufi movement contributed immensely in this regard. Both the Bhakti and the Sufi movement believe that all humans are equal, God is supreme, and devotion to God is the only way to achieve salvation. तो मोहम्मद प्रॉफिट जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म की खोज की थी 17th सेंचुरी के आसपास, जो कि अरेबिया में उन्होंने खोज की थी और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार उन्होंने अदर कंट्रीज़ में भी शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए हैं इस्लाम धर्म के कि आपको अल्लाह पे बिलीव करना चाहिए, आपको नमाज पढ़नी चाहिए एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे, आपको रोज़ा रखना चाहिए रमज़ान के महीने में, इवन आपको ज़कत करना चाहिए और आपको हज की यात्रा भी करनी चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद का ये कहना था कि जो हदीस है उसे प्रिजर्व करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, और उनकी डेथ के बाद जो कलिफ्स थे उन्होंने उनके जो मुस्लिम धर्म को क्या किया था, प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। साथ ही साथ ये मानते थे ब्रदरहुड पे, और इनका ये मानना था कि गॉड जो है, अल्लाह जो है वो एक ही है। राइज ऑफ सूफिज़म। Sufism is common term used for Islamic mysticism. The Sufis were very liberal in their religious outlook. They believed in the essential unity of all religions. They preached spirituality through music and doctrines. They professed union with God. Sufism originated in Iran and found a congenial atmosphere in India under the Turkish rule. Their sense of piety, tolerance, sympathy, concept of equality and friendly attitude attracted many Hindus, mostly from lower classes, to Islam. Sufis such as Moinuddin Chishti, Nizamuddin Auliya, Fariruddin Ganje Shakkar were the pioneer Sufis who are still loved, respected and honored in India. The Sufis were also influenced by the Christians and Buddhist monks regarding the establishment of their khandaqs and dargahs. Khandaqs, the institution of board of Sufis set up by the Sufis in northern India, took Islam deeper into the countryside. Mazar, tombs and taqiyas, resting places of Muslim saints, also became the center for the propagation of Islamic ideas. These were patronized both by the aristocrats and the common people. The Sufis emphasized respect for all human beings. The Sufis were organized into religious orders or silsilas. These silsilas were named after their founders such as Chishti, Surahawardi, Qadi and Naqshbandis. According to Abdul Fazl, the author of the N.K. Akbari, there were as many as 14 silsila in India during the 16th century. Each order had its own khanqa, which served as a shelter for the Sufi saints and for destitutes, and later developed as a center of learning. Ajmer, Nagaur and Azodhan or Pak Patan, now in Pakistan, developed as important center of Sufism. These also started the tradition of Piri Murti, teachers and the disciples. In order to attain a state of mystical ecstasy, the Sufis listened to poetry and music, sama, which were originally in Persian, but later switched to Hindwahi or Hindustani. They preached the unity of God and self-surrender unto Him in almost the same way as the votaries of the Nirgun Bhakti movement did. Music attracts everybody, irrespective of language. Slowly, such music attracted the Hindus who started visiting the dargahs in large number. The Hindus' impact on Sufism also became visible in the form of siddhas and yogic postures. तो सूफिज़म का राइज कैसे हुआ? सूफिज़म एक कॉमन टर्म मानी जाती है जो कि यूज़ की जाती है इस्लामिक मिस्टिज़म के लिए। जो सूफीज़ थे वो काफ़ी लिबरल थे अपने रिलीजियस आउटलुक के थ्रू।
वो मानते थे एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी को वो प्रीच करते थे, उसका प्रचार प्रसार वो करते थे थ्रू म्यूज़िक एंड डॉक्ट्रिन्स। इनके जो म्यूज़िक हुआ करते थे, जो ये कविताएं वगैरह लिखा करते थे, जो सूफ़ी ये जो सॉन्ग लिखा करते थे, इससे जो मुस्लिम जो राजा हुआ करते थे, मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे, वो तो इंस्पायर होते थे, साथ ही साथ हिंदूज़ भी इनसे इंस्पायर होते थे, ठीक है। Bhakti movement. The Sufis were not the only popular religious teachers of the time, they were also the Bhakti saints. Their teachings were similar to those of Sufis, but they had been teaching for a longer time. They were popular among the artisans, craftsmen and traders in the town. The people in the villages also flocked to listen to them. The Sufi and Bhakti saints had many thoughts and practices in common. Their essential belief was in the need to unite with God. They had laid stress on love or devotion as the basis of the relationship with God. To achieve all this, Guru or a Peer was needed. अब भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया गया है। जो सूफीज थे वो पॉपुलर थे अपने रिलीजियस टीचर्स के रूप में, और ये भक्ति सेंट्स भी माने जाते थे। इनकी जो टीचिंग्स हुआ करती थी वो सूफीज से ही सिमिलर हुआ करती थी, ठीक है, और ये काफ़ी पॉपुलर्स हुआ करते थे अमंग आर्टिसंस, क्राफ्टमैन्स एंड ट्रेडर्स इन द टाउन। जो पीपल विलेज में रहा करते थे वो भी इनके म्यूज़िक वगैरह सुना करते थे। सूफ़ी और जो भक्ति सेंट्स हुआ करते थे उनके अलग अलग थॉट्स हुआ करते थे, और जिसे जो लोग वो होते थे कॉमन लोग वो प्रैक्टिस किया करते थे। द भक्ति सेंट्स अटैक्टेड द रिजिडिटी in religion and the object of worship. They disregarded caste and encouraged women to join their religious gathering. The Bhakti saints did their entire teaching in the local vernacular language to make it comprehensible even to simple minds. The Bhakti saints belonged to various backgrounds but mainly from the lower caste. Many were artisans by origin or belonged to the less prosperous class of cultivators. They stressed the need for tolerance among humans and religions. The Bhakti movement was long known in the South. The idea of preaching Bhakti through hymns and stories was traditionally done by the Alvars and the Nainmars of the Tamil devotional cults. जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने काफ़ी रिजिड जो रिलीजन हुआ करते थे उन पे अटैक किया था, और वो वर्शिप ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी रिजिड किया करते थे, अटैक हमेशा करते रहते थे। उनका मानना था कि जो भक्ति है वो किसी पे आप थोप नहीं सकते, आप उसको किसी को भी मतलब ये फ्रीडम दिया जाना चाहिए कि वो इजीली अपना जो भगवान है या किसी भी चीज़ को मानता है वो इजीली उसकी वर्शिप कर सकता है। इन्होंने वुमेंस को भी बोला ज्वाइन करने के लिए काफ़ी रिलीजियस मूवमेंट्स को, और काफ़ी गैदरिंग्स में वुमेंस वगैरह को भी ये ज्वाइन करवाते थे। भक्ति सेंट्स जो होते थे वो वेरियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, ठीक है, इनके कोई पर्टिकुलर रिलीजन्स नहीं हुआ करता था। इसमें ज़्यादातर आर्टिशंस हुआ करते थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो सूफ़ी जो पोएट्स वगैरह होते थे, जो कवि वगैरह होते थे वो इसमें शामिल होते थे। भक्ति मूवमेंट जो था वो साउथ में ज़्यादा जाना जाता था, और जो आइडिया था प्रीचिंग ऑफ भक्ति का वो हाइम्स एंड स्टोरीज के थ्रू करवाया जाता था। Guru Nanak was born in Khatri family in the village of Talwandi, which is now called Nankana. Though Guru Nanak was trained in accountancy, he preferred the company of saints and Sufis. Sometime later, he had a mystic vision. He left home for the company of saints and paints. He composed hymns and sang them to the accompaniment of the rabab, which is a musical instrument. His hymns are popular even today. He emphasized love and devotion for the one and only God. He strongly denounced idol worship, pilgrimage, sacrifices and rituals as a way to achieving God. He demanded purity of characters and conduct as the first condition of approaching God. He believed that anyone could achieve a spiritual life while doing his duties as a householder. तो बच्चों पहले बताया गया गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक जो थे वो खत्री फैमिली में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और तलवंडी एक विलेज था वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक जो थे वो ट्रेन थे इन अकाउंटेंसी, हालांकि इनका जो इंटरेस्ट था वो वर्शिप में ज़्यादा हुआ करता था, धर्म में रिलीजियस में इनका जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा गया था।
फिर बाद में इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था और इन्होंने सिख धर्म की भी खोज की थी। साथ ही साथ ये मानते थे कि भगवान जो है वो एक है, वो निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है। तो मूर्ति पूजा का ये क्या करते थे, खंडन करते थे। और साथ ही साथ ये भी ये मानते थे कि आपको पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के काम करके भी, लोगों को खाना खिला के भी भगवान की सेवा, भगवान की पूजा कर सकते हैं। सम रिफॉर्मर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट्स। Ramanuja was from the south and he taught in the language of the common people. His disciples were Ramananda, who took his guru's message to the northern part of India. तो बच्चों कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट में अपना योगदान दिया था, जिसमें पहले थे रामानुजा जो थे वो साउथ से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कॉमन पीपल्स को काफ़ी धर्म के बारे में ज्ञान उन्होंने दिया है। उनके जो डिसिपल्स होते थे वो रामानंदा कहलाते थे और वो अपने गुरु का मैसेज जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में लेकर के जाते थे, वहाँ उनको प्रचार प्रसार वो करते थे। Ramananda was born at Allahabad and educated at Varanasi. He preached at both these places. He wanted to rid the Hindu religion of its evil custom and practices. He wanted people to know that all men were equal in the eye of God and there was nobody high born or low born. His followers belonged to different walks of life. For example, Kabir was a weaver, Sadhana was a butcher, Ravidasa was a cobbler and Sena was a barber. रामानंदा के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था और इन्होंने वाराणसी से अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। इन्होंने अपने धर्म का काफ़ी जगह पे प्रचार प्रसार किया था। ये मानते थे कि हिंदू धर्म से जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं वो हट जाए और लोग जो है वो भगवान की नज़रों में एक हैं, ये लोग मानने लग जाए। मतलब चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, वो सब के सब भगवान की नज़र में एक हैं। उनके जो फॉलोअर्स थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। जैसे कि कबीर जो थे वो वीवर्स थे, साधना जो थी वो बूचर थे और रविदासा जो थे वो कॉबलर थे एंड सेना वॉज अ बाबर। Kabir was Ramananda's favorite disciples. Like Nanak, he criticized the exile social order and called for the Hindu-Muslim unity. Kabir, the son of a Muslim weaver, strongly denounced idol worship, taking part in formal worship such as namaz, pilgrimage or bathing in river. He wanted to preach a religion which was acceptable to all and that would unite all religions. He emphasized the unity of God. Kabir called Ramananda by several names such as Rama, Govinda, Hari and Allah. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Parts, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, Panchwani and Bijak. बच्चों कबीर जो थे वो रामानंदा के फेवरेट डिसिपल, उनके शिष्य माने जाते थे और नानक की तरह वो भी सोसाइटी में जितने भी कुरीतियाँ वगैरह फैली हुई थी उसके ये खिलाफ थे और हमेशा वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात किया करते थे। लोगों से अपील किया करते थे कि भगवान की नज़र में सब एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है। वो ऐसे रिलीजन को प्रीच करना चाहते थे जो कि सबके थ्रू एक्सेप्टेबल हो। चैतन्य महाप्रभु। Chaitanya was a saint from Bengal. He was a devotee of Lord Krishna. Though he was a Brahman, he condemned the caste system and emphasized on the equality of all. He wanted the people to know that the true worship lies in the love and devotion. He used to go into art tracing, singing devotional songs in the praise of Lord Krishna. चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान लेते हैं। ये बंगाल से बिलोंग करते थे और ये डिवोटी माने जाते थे लॉर्ड कृष्णा के। हालांकि ये ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी ये कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे, ये सबको एक बराबर ही मानते थे और लोगों से भी अपील करते थे। मीराबाई was another bhakti saint who worshipped, composed and sang songs in praise of Lord Krishna. Like Chaitanya, she too would go into trance in her love for the God. मीराबाई जो थी वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती थी और उन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग गाए भी थे भगवान श्री कृष्ण के लिए। नामदेव was a tailor. He wrote in Marathi. His poetry spoke of intense love and devotion to God. तो बच्चों नामदेव जो थे वो भी टेलर थे और वो भी एक भक्ति मूवमेंट के एक अधिकारी माने जाते थे और वो भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स वगैरह गाते थे जो कि गॉड को डिवोटेड होते थे। Popularity of the Bhakti movement.
How the Bhakti movement became so popular with the people. An important reason was that they challenged the caste system and the superiority of the Brahmanas. They welcomed the ideas of equality and brotherhood, which the Sufi saints also preached. People were no longer satisfied with the old religions. They wanted a religion which could satisfy both their rationality as well as emotions. All the Bhakti saints emphasize oneness of God. They said that the path to God lay in devotion and bhakti to Him and not in any ritual. They condemned rituals and sacrifices. In northern India, it developed into two streams, Nirguna Bhakti and Saguna Bhakti. The Nirguna Bhakti were devotees of the formless God, even while calling Him variously as Rama, Govinda, Hari or Raghunatha. The most conspicuous among them were Kabir and Nanak. The Saguna Bhakts were devotees of Rama, the son of Dasharatha, or Krishna, the son of Devaki or Vasudev. Some of the best examples of Saguna Bhaktas were Tulsidasa, who idolized Rama in his famous Ramcharitmanas, and Surdas, who sang praise of Krishna in his famous Sursagar. Rakshan, a Muslim poet who was a devotee of Lord Krishna, also belonged to this tradition. The first important feature of Bhakti movement was the concept of oneness, the God and brotherhood of all human beings. It did not discriminate against anyone on the basis of caste or gender. Its second important feature was surrender into God, who is all pervasive and capable of solving the problem of the devotees. The third important feature of bhakti was an intense personal devotion of God with an emphasis on a good moral life. It was felt that chanting in the name of God constantly purified the soul and prepared one for His grace. अब भक्ति मूवमेंट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी क्यों? क्योंकि ये जो था ये गॉड की वननेस में बिलीव करता था और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ था उनके ये खिलाफ आंदोलन उठाते रहते थे, तो लोग इनसे काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि वो भी यही चाहते थे, समाज में लोगों को इक्वल दर्जा मिले, भाईचारा बढ़े और भगवान जो है वो एक ही हो, मतलब वो उनकी नज़र में सबको एक ही माना जाए। नॉर्थन इंडिया में ये डेवलप हुआ था टू स्ट्रीम्स में, एक थे निर्गुणा भक्ति एंड दूसरा था सरगुणा भक्ति। निर्गुणा भक्ति जो थे वो ऐसे डिवोटीज थे जो कि फॉर्मलेस गॉड की पूजा किया करते थे, जबकि जो सरगुणा जो भक्ति होती थी उसमें जो डिवोटीज हुआ करते थे वो राम जी की, जो राम जी थे दशरथ के सन, उनकी पूजा किया करते थे, साथ ही साथ कृष्ण जी की उसमें पूजा हुआ करती थी। सगुना भक्तास में तुलसीदास शामिल थे जो कि राम जी की पूजा किया करते थे और उन्होंने रामचरितमानस भी लिखी है जिसमें उन्होंने राम के बारे में बताया है। A true devotee does not want heaven or moksha. He only wants to chant the Lord's name and be born again and again to sing His praise. In addition came the guru or spiritual teacher whose function was to provide people with hope, strength and inner courage. He was supposed to be a person who had marched ahead on the path of bhakti and had probably realized God and hence was capable of leading others into Him. This brought in a system of pahol. Pahol was a sanctified water offered by a master to the people or shishya as a token of his being accepted as a trainee or his march to godliness. The Sikhs performed washing of the swords ceremony called Khande Ka Pahol, evolving as the Pirmuridi custom, the sent soldiers concept. Have you been able to notice here some features of Bhakti tradition which were similar to the practice and ideas of Sufis? The spirit of Bhakti pervaded the whole of India and found vivid and beautiful expression in religious poetry of the medieval saints and mystics. No matter what religious faith they believed in, their literary composition rendered into Geet, Qawwali, etc. united people as nothing else could have done. It also stimulated the development of regional language. तो भक्ति मूवमेंट में बच्चों गुरु वगैरह अपॉइंट किए जाते थे जो लोगों को बताते थे भगवान के बारे में। स्पिरिचुअल टीचर जो था वो रखा जाता था और वो फंक्शन प्रोवाइड करता था पीपल्स को विद होप, स्ट्रेंथ एंड इनर करेज। वो ऐसा पर्सन माना जाता था जो कि ग्रुप के आगे अहेड करता था, उन्हें लीड करता था भक्ति आंदोलन में और उन्हें बताता था
भगवान के बारे में कि भगवान जो है वो एक है। तो उनका विश्वास वो जगाता था भगवान में, और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी वो हटाने के लिए उनसे आग्रह करता था। साथ ही साथ लोगों से ये आग्रह करता था कि लोग जो है वो भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहे। New faiths. During this period, two new religious faiths flourished in India. They were Sikhism and Zoroastrianism. To bring the established reform with religions, various reform movements also started in India. अब उसी दौरान इंडिया में दो रिलीजियस फेथ जो थे वो फ्लरिश हुए थे। एक था सिखिज्म एंड दूसरा था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। सिखिज्म के बारे में जान लेते हैं। द सिख्स हु मोस्टली बिलोंग टू पंजाब फॉर्म अ sizable group of our population. The Orthodox Sikhs believe that their religion was revealed by God to Guru Nanak, whose spirit entered the second and the subsequent Guru till the 10th Guru. Guru Gobind Singh ordained the Sikhs to treat the Adi Granth, popularly known as the Guru Granth Sahib, as their Guru, but the student of history and religions were present in the Bhakti movement. In its Nirguna branch, the Sikhs basically believe in a formless God, equality of all mankind, need of a Guru, and the Pahol tradition. Sometimes the Gurudom was conferred on the son and sometimes on the best disciple. The fifth Guru, Guru Arjan Dev, gave the Sikhs three things. The first was in the shape of the Adi Granth, which contained the saying of 5 Gurus and other allied saints. The second was the standardized script for Gurumukhi, in which the Adi Granth was first written. And finally, the site and the foundation of the Harmandir Sahib, or the Golden Temple, and the Akal Takht at Amritsar, the highest seat from where the dictates for the entire Sikh community are issued. सिखिज्म के बारे में जान लेते हैं। सिख्स जो थे वो मोस्टली पंजाब से बिलोंग करते थे और उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो तैयार कर दी थी। ऑर्थोडॉक्स सिख जो थे वो अपने धर्म में इस तरह से मानते थे क्योंकि वो गॉड को ही गुरु समझते थे, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो ऑर्डन थे टू सिख टू ट्रीट द आदि ग्रंथ, और पॉपुलरली इसे गुरु ग्रंथ साहिब ने ही इंट्रोड्यूस किया था। जो गुरु डोम्स होते थे वो कंफर्म करते थे ऑन द सन एंड समटाइम्स वो बेस्ट डिसिबल्स भी माने जाते थे। जो फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने सिक्स को 3 थिंग्स दी थी। फर्स्ट थिंग जो थी उन्होंने कहा था कि आदि ग्रंथ को आप शेप दोगे जिसमें आपके 5 गुरुज जो हैं और दूसरे जो अलाइड सेंट्स हैं उनको आप स्थान दोगे। सेकंड जो था वो स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट था, गुरुमुखी को आदि ग्रंथ बनाया गया था, वॉज फर्स्ट रिटन। और साथ ही साथ जो साइट एंड फाउंडेशन थी हर मंदिर साहिब और गोल्डन टेम्पल, वो भी उन्हीं दिनों अमृतसर में बनाए गए थे। The 10th Guru, Guru Gobind Singh, created the Khalsa, which means the poor. In 1699, he also ordained the Sikhs to take 5 vows, namely keeping of kesh, long hair and a bread, kanga, comb, kada, a metallic bangle, kirpan, a sword, and kacha, and underwear extending to a little above the knees. Consequently, these symbols became the distinguishing marks of the Sikh. He further added that after his death, the Adi Granth will be the Guru of Sikhs and they have to pay obeisance to the holy book. Music has always been an important feature of Sikhism. They believe that through music one can attain ecstasy or samadhi. तो बच्चों जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद साहिब, वो खालसा उन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था, जिसका मतलब था पुअर। और उन्होंने जो सिख कम्युनिटी उन्हें 5 वोज, 5 तरह की शपथ जो थी उन्होंने लेने के लिए उनसे कहा था। Zoroastrian, the age, the Parsi or Zoroastrian religion was founded by Zarathustra or Zoroaster in the 18th century BC. He preached monotheism in the region now known as Persia. He taught the worship of fire and the presence of God and bad in the form of Ahura Mazda and Ahura Main. He also taught the ethical doctrine of kindness and charity. These doctrines are enshrined in the Zend Avesta. The Zoroastrian religion spread over the whole of Persia and remained the dominant religion till the 18th century AD. When Muslims conquered this region, most of the Parsis migrated to different parts of the world. They also came to India and settled at Navsari in Gujarat, and later on spread to almost all parts of India. They have contributed a lot to Indian culture. It was
Dada Bhai Naroji, the famous nationalist leader and a Parsi who exposed the hollowness of the British, claimed the civilizing India and not exploiting it. Another outstanding figure who belonged to this community was Jamshedji Tata, a pioneer Indian industrialist. He established an iron and steel industry in India in the face of the toughest competition posed by the British steel mills, and yet continued to prosper. The Parsis also established a large number of public charities. Zoroastrianism is not a proselytizing religion, and no new entrant are accepted into its fold under any circumstances. Thus, we can see that the cultural stream in India continued to assimilate all the newcomers, and the resulting cultural interaction gave the Indian culture its characteristics: multidimensional, multilingual, multireligious and yet कंपोजिट नेचर। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं जोरास्ट्रियन जो धर्म है उसके बारे में। जो जोरास्ट्रियन जो रिलीजियस है वो पर्सिया से बिलोंग करता था, और जो मुस्लिम जो राजा हुआ करते थे वो बार बार उनका जो राज्य था, जो स्टेट था, जो कंट्री था उसे कॉन्कर करते रहते थे, बार बार वहाँ पे आक्रमण करते रहते थे, जिसकी वजह से तंग आकर वो लोग इंडिया की तरफ भाग करके आ गए थे और गुजरात के आसपास के एरिया में वो जा कर के बस गए थे। Case study: Kabir, AD 1440 to 1518. Kabir was one of the leading Bhakt saint of 15th century. He had lived before Guru Nanak. He was popularly called by his devotees as Saint Kabir Das. Note carefully, the term Das cannot be said to be of any particular origin. In Sanskrit, the term Das stands for a slave, Dasa, and in Arabic it means great. Many of the Bhakti saints were considered great by the people, while they themselves were regarded as the servant of people. Kabir was a weaver by profession and was persecuted by Orthodox Muslims, yet he stands out tall among all Bhakti saints. It is largely because of his efforts towards promoting tolerance between Hindus and Muslims and among different castes of the same religion. His ideas are contained in a vast collection of verses called Sakhis and Pardas. These were composed by him and sung by wandering bhajan singers. The complete song is broken into dohas or couplets. These songs are sung all over the country even today. Many of his verses have also been included in Guru Granth Sahib. Others are compiled in the form of Panchvani and Bijak. The inclusion of these verses in Holy Book of Sikhs show his influence on Guru Nanak, who lived in the later period. The time when Kabir lived, 15th century, was a period of great political upheavals in India. Kabir lived a simple life of prayer and devotion of God. He recommended singing the dohas in praise of God. Here is an excerpt from his dohas. Study the excerpts carefully and find out how Kabir sum up certain realities in this couplet. दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए. In anguish everyone prays to him, in joy does none. To one who prays in happiness, how sorrows can come? The scholars have drawn many conclusions from this dohas. Whatever may be the merit of the conclusion by scholars, one thing is beyond doubt. Kabir taught the unity of God and religion. His teaching openly ridiculed idolatry and external form of worship by Hindu and Muslim. He also did not attach any importance to priestly classes, nor did he believe in caste system. This represents a challenge to formal religions of this time. He encouraged people to search their own hearts if they wanted to find God. What Kabir preached was not any philosophy but giving up of 5 passions: lust, anger, greed, bondage and selfishness. Kabir believed in formless supreme God and preached that only path to salvation was through bhakti or personal devotion. He drew his followers from different religions including Hindus and Muslims. तो बच्चे यहाँ पे हम केस स्टडी करेंगे कबीर के बारे में। कबीर जो थे आपको पता ही है, ये लीडी भक्ति सेंट्स माने जाते थे 15th सेंचुरी के। ठीक है, इन्होंने गुरु नानक से पहले की ज़िंदगी जी है और ये गुरु नानक से पहले काफ़ी
पॉपुलर थे। इन्होंने काफ़ी सारे दोहे लिखे हैं जिसमें इन्होंने बताया है भगवान के बारे में कि भगवान जो है वो एक है। ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, ना ही ये हिंदूज़ के जो रिलीजन्स थे उसको मानते थे, ना ही ये मुस्लिम के रिलीजन्स को मानते थे। ये अपने ही रिलीजन्स को फॉलो करते थे जिसमें ये वननेस ऑफ गॉड को फॉलो करने के लिए कहते थे। कीवर्ड्स: पीर, अ टीचर और गुरु; prophet, messenger of God; dargah, a place where a Sufi saint is buried; silsila, sect or house of order; Vaishnavate, a worshipper of Lord Vishnu. Let's recapitulate. The Sufis, with their attitude of pity, tolerance, sympathy and concept of equality, had a deep impact on the Indian people. The Bhakti movement of 14th and 16th centuries developed into two streams, Nirguna and Saguna. Sikhism was founded by Guru Nanak. Guru Arjan Dev finalized the present script of Gurumukhi, the Adi Granth and the site of Harminder in Amritsar. Zoroastrianism was founded by Zoroaster in 18th century BC in Persia. Islam had a great influence on the Indian society. There were two important religious movements during this period, the Sufi and the Bhakti movements. The most important Sufi saints were Christi, Ferdowsi and Nizamuddin Aulia. Some well-known Bhakti saints were Guru Nanak, Ramanuja, Ramananda, Kabir, Chaitanya, Mirabai and Namdeva. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.